Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 6th and 7th of July. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. If you are new here students, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives and neighbors. Also, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on regular basis students. In this video we will be talking about INC WMC conference was held in Hyderabad. Then Amit Shah, our Home Minister, has laid the foundation stone and inaugurated multiple projects in Pune, Maharashtra. Then Karnataka Cabinet has approved the renaming Bengaluru City University after former Prime Minister Manmohan Singh. And LIC Life Insurance Corporation has launched two new plans, that is Najivan Shri and Navjivan Shri Single Premium. We will be discussing all these things and many more in this video, so stay tuned with us till the end. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs students. INC WMC, that is Indian National Committee of the World Mining Congress, it concluded their international conference that was held on the sustainable and responsible mining through the best mine closure practices. This was held where? This is the first question that can be asked. It was held in Hyderabad, Telangana. This event, it brought together multiple policymakers from various industries, environmental experts, academicians, stakeholders from India as well as abroad together, so that responsible methods and strategic discussions can take place. During this event, a mission green booklet, this was launched, right, or the outlines the best practices for the mine closure, right, that how we can also restore the ecosystem and repurpose the used mine area or mine land for community benefits, right, such as for agriculture or for fisheries area, right. And during this, a copper vision document was also launched. So first focus was on mission green booklet, and second was copper vision document, right. This is basically positioning copper a critical material or critical mineral for India's green energy transition, that includes your electric vehicles and solar power plant also, right. So this is your copper vision document. Then apart from this, a aluminium vision document was also launched that was targeting the aluminium, right. Take a note of this. So mission green booklet, copper vision document, then came your aluminium vision document, right. Take a note of this students. Moving on, next is Amit Shah, our Home Minister, has laid the foundation stone and inaugurated multiple projects in Pune, Maharashtra. This is the location here, right. Take a note of this. Then next thing, remember, these projects, they will include the installation of a statue and the development of Jairaj Sport and Convention Center, correct. Apart from this PHRC, that is your Pune Hospital and Research Center, right. This is a health city project, and for this also Amit Shah has laid the foundation stone, and where this Pune Hospital and Research Center will be established, this health city project will be established in Pune, right. This will span across 14 acres of land and have a built up of 1 million square feet of area. Then next is your Jairaj Sport and Convention Center. Second project is Jairaj Sports and Convention Center. Then third is statue of Bajirao Peshwa. Statue of Bajirao Peshwa was also unveiled. That was a 13.5 feet tall statue. That is statue of Bajirao Peshwa the First. Next is, here you can see everything. Then next is Karnataka Cabinet has approved renaming Bengaluru City University after former Prime Minister Manmohan Singh. This is an interesting news and an important one. Direct question can be asked that which city will be renamed after former Prime Minister Manmohan Singh. So Bengaluru City University will be renamed after him. And it is the first university to be named after Prime Minister Manmohan Singh, who passed away last year on 26th of December 2024. Right, and he was the 13th
Prime Minister of India for 10 years, right? That was 2 terms. Next, also one more thing, he was honored with Padma Bhushan in 1987, Padma Vibhushan in 2001 for his public affairs. Next is banking and finance. LIC, that is Life Insurance Corporation, they have launched 2 new plans, that is Navjeevan Shri and Navjeevan Shri single premium. These are the 2 life insurance products that has been recently launched, right? And these will offer combination of saving as well as protection features that are designed to cater financial requirements of the buyers at the stages of life. And LIC has launched the critical illness health rider also. This is a non-linked individual health rider that can be integrated to the eligible base plan, and it will offer financial support upon diagnosis of pre-specified critical illness, right? And this Navjeevan Shri, this is plan 912 of LIC that will cater to all the needs of the individuals who aspire to fulfill their dreams, goals, responsibilities, as well as to provide security. And this Navjeevan Shri single prem, this is your plan 911, right? This is a single premium policy to that is meant to build corpus and to offer life insurance. And the minimum age at the entry should be at least 30 days, while the maximum age should be 30 years. For both the plans, maturity age will be 18 years. If we talk about LIC, who is the Chief Executive Officer and Managing Director here? Satpal Banno, headquartered in Mumbai, Maharashtra. Next is CCIL, that is CCIL International Financial Service Limited, IFSC. They have signed an agreement with Standard Chartered Bank to act as a settlement bank. Take a note of this, student. So which bank or which organization recently signed an agreement with Standard Chartered Bank so that it can act as a settlement bank? Correct, it is your Standard Chartered Bank. This will enable the real-time settlement of the dollar transactions at GIFT City, that is in Gandhinagar, Gujarat. Under this agreement, Standard Chartered Bank's international banking unit that will act as a settle bank here for CCIL IFSC, and here businesses and financial ecosystem will be benefiting as US dollars will be settled through them. Next is economy and business. Traction report has been released and India ranked 3rd globally in fintech startup funding. See, if we are talking about startups, India stands at which position? India stands at 3rd position. And if we are specifically focusing on the fintech startups that are your finance, what is fintech? Finance and technology. So the startups that are focusing on finance and technology, those are your fintech startups. And in that index also, India stands at the 3rd position. On 1st, it is USA. On 2nd, it is UK. And on 3rd is our country, India, in terms of fintech startups. If we look at the data, India's fintech sector has raised a total of $889 million in the first half of year, that is from January to June, that is the first half of 2025. That is a decline of 26% from $1.2 billion in the second half of 24 that was raised, right? So take a note of this. Also, this report highlighted that 10% rise has been seen in the early stage funding that stood at $361 million. Also, if we talk about Bengaluru, they continue to lead the fintech funding, right? They continue to lead the fintech funding landscape. And they accounted for almost 55% of the fintech funding in India, followed by Mumbai just at 14%. Next, Cochin Shipyard, they have signed an MOU with South Korea's KSOE. What is this? This is Korea Shipbuilding and Offshore Engine Energy Limited, right? This will boost India's shipbuilding capabilities. So, Kochi, Kerala based Cochin Shipyard Limited, India's largest public sector shipbuilding company, have signed a memorandum of understanding with South Korea based HD Korea Shipbuilding and Offshore Energy Company Limited. Right, take a note of this. This will boost the long-term cooperation in shipbuilding and workforce development and international maritime innovation. This MOU will cover long-term collaboration areas such as joint collaboration, research and development, technical expertise will be shared here, right? And identification of various initiatives will be there. Productivity and capacity utilization will be focused upon. Next is appointments and resignation. Thailand has appointed Phumtham Vechiachi as the acting prime minister, right? As you can see him in the picture, he has been appointed as the acting prime minister now. Next is Sub-Lieutenant Astha Punia became Indian Navy's first women fighter pilot and has received the Wings of Gold. Important. Who became the first women fighter pilot for Indian Navy?
She is Astha Punia, Sub Lieutenant Astha Punia. And who received the Wings of Gold recently? So she is Sub Lieutenant Astha Punia. This milestone marks this milestone it marked during the graduation ceremony of the second basic Hawk conversion course at the Indian Naval Station Dega, INS Dega. During this, and on this she was honored with this. Correct, Wings of Gold. This achievement follows the Indian Air Force decision in 2016 to induct women into fighter teams, where 25 women fighter pilots are currently serving. Astha Punia, she is from Uttar Pradesh. Next is Priyanka Kakkar, appointed as the co-president of BRICS CCI Women's Wing for the term 2025 to 2027. That is for a period of 2 years. That is from FY25 to FY27. Priyanka Kakkar, correct. BRICS Chamber of Commerce and Industry, correct. For them, Priyanka Kakkar has been appointed as the co-president, and she is the chief spokesperson of the Aam Aadmi Party here. She has been appointed to this post due to her leadership acumen and unwavering commitment to women's empowerment. Next is Anant Tech, set to launch India's private satellite broadband service. What is this? Internet will be provided with the help of satellites, right? And one such organization we famously know about is Starlink. They will also be providing internet services in India with the help of Jio and Airtel, right? So Starlink partnered with Jio as well as with Airtel in order to provide satellite internet in India. And now it is Anand Tech. They will also launch India's private satellite broadband services. And here it aims to compete with international space tech giants such as your Starlink, then Jeff Bezos led Amazon Kuiper, Eutelsat OneWeb, and many more. ATL here, Anand Tech Limited, they are planning to deploy 4-ton geostationary communication satellite that will offer data capacity of maximum of 100 GB per second, that is Gbps, across the country. Then next, one more data, remember, according to InSpace students, they are saying that India's space economy, it is expected to touch $44 billion, or they expected to touch $44 billion by 2023. And if you remember, our country has also allowed 100% FDI in space sector. Next is NASA has discovered 3I/Atlas, that is the third known interstellar comet passing through our solar system, right? This is a comet and that is passing through our solar system. It has been named this, and it is the third such interstellar comet. Interstellar is, that means it does not came from our galaxy, right? Or not from galaxy, from our solar system. It is passing by our solar system. And this comet, it is estimated to be of a diameter of 20 kilometer. It carries about 670 million kilometers. It is about this many kilometers away from sun and is traveling at a speed of 60 kilometer per second. And this interstellar object, I mention again, it is a space object that travels through space without being pulled by the gravity of any star, and it is passing through our solar system now. Next is International Day of Cooperatives, observed on 5th of July. This day is observed to increase awareness of the cooperatives and promote ideas of international solidarity, economic efficiency, equality, world peace, and contributing to the development of society. There is a theme, students, here: cooperatives, driving inclusive and sustainable solutions for a better world. Also remember, this day is generally observed on the first Saturday of July. On the first Saturday of July month. Next is state news, students. Odisha and Skymet Weather Services, they have signed a memorandum of understanding for the implementation of WINDS project. What is WINDS project? Weather Information Network Data System. Right? So take a note of this, students. This is a quite interesting project. This project aims to improve weather data accessibility. That means better data related to the weather will be provided here, right? So that the risks that are there associated with agriculture, crop insurance, disaster preparedness can be overcome. This will also enhance the implementation of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. And under this initiative, automatic weather stations will be installed at the block level so that the proper data can be received by these satellites, and then with the help of
AI and with the help of various tools, we can analyze that data and come up with a meaningful output. Next, students, Bihar has launched Mukhyamantri Pratigya scheme for youth internships and skill development. I repeat, Bihar's Chief Minister Nitish Kumar has announced the launch of Mukhyamantri Pratigya scheme, officially named as CM Pratigya. Right? What is this? Chief Minister Promotion of Readiness. Chief Minister Promotion of Readiness, Awareness and Technical Insights for Guiding Youth Advancement Scheme. This scheme has been introduced under the Bihar's Sat Nishchay Scheme Development Program to empower the youth through skill development and entrepreneurship opportunities. So, skill development of the youth as well as to provide them with internship opportunities. This scheme has been launched. This initiative will be targeting 1 lakh youths during the period from 2025 to 2030. The initial target here is to support almost 5,000 youths in the first year, and the youths under the age of from between the age of 18 to 28 will be targeted here, and financial assistance will be provided to them. For example, for class going students 4,000 rupees per month, then for ITI certificates 5,000 rupees, for graduates and postgraduates 6,000 rupees per month. Next is Indore, Madhya Pradesh. They have launched India's first QR based digital house address system. Right, they have launched India's first QR, that is quick response based digital house address project, that will modernize the civic services and improve the urban governance under India's smart cities mission. The project was implemented on a pilot basis in ward number 82 located in the Sudamanagar area of the Indore city. This project will feature unique QR codes that are digitally plated and installed on every houses, and by scanning the code with a smartphone, the citizens and authorities can instantaneously retrieve the property's precise digital address. Right, so it will be a game changer in India's both real estate sector as well as for addressing the digital house address systems. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part. It will be quite beneficial for your learning. Next, students, is our homework section. First is, when do we observe Samvidhan Hatya Divas? Tell me the date of it and the edition which we observed. Second, MSME Day. When do we observed it? Third, National Statistics Day. When do we observed it plus the theme of it? Fourth, when was or recently name the cricketer who has launched his autobiography. And fifth question, tell me recently who has won the, or name that person who has won the Ostrava Golden Spike 2025. So these are your 5 homework questions, and I need to see maximum participation from all of you. RBI allowed separate training of the registered interest and principal securities in state government securities. Question asked is, what is the minimum outstanding amount required for fixed coupon bonds issued by the state government or union territory to qualify the strips here? So what is the minimum outstanding amount? It is minimum amount required here is of 1000 crore rupees. This will be in addition to the existing stripping and reconstitution allowed since April 1st 2010 in eligible central government data securities. And if we talk about the stripes, these are the securities that represent either the principal or each interest payment of a bond, allowing them to be traded separately in the bond market. And here the maturity of them is 14 years. These fixed coupon bonds. Next, Gombozov Zendaster was appointed as the 34th Prime Minister of Dash. He was appointed as the 34th Prime Minister of Mongolia. Next, identify the country defeated by South Africa to win the 23-25 International Cricket Council World Test Championship final held in London, England in June 2025. It is Australia, right? And this was the 3rd edition of the ICC World Test Championship, right? It was held from 16th of June 23 till 14th of June 2024, and it is Australia that has won it, right? Oh, sorry, I correct. South Africa has won it. They defeated Australia in the final. So who won it? It was won by South Africa. Next, who won the 63rd edition of the Canadian Grand Prix held in the Montreal, Canada, marking his first F1 Grand Prix victory of the 2025 season? So George Russell has recently won the Canadian Grand Prix, right? Take a note of this. And
Here, if we see the overall drivers championship standing, in that George Russell stands at the 4th position. He is from Germany and he drives for Mercedes. Next, what is the theme of the Global Wind Day? The day being observed each year on 15th of June across the globe to raise awareness about the potential of wind energy in reshaping global energy systems and promoting a sustainable future. It is Day of Community Action. This is the theme here. Right? World Wind Day was first observed in 2007, first time, right? And it is Ministry of New and Renewable Energy that hosted the event here. Next, which two countries qualified the FIFA Men's World Cup 2026 for the first time ever, confirmed during the Asia qualifiers in June 2025? So, Uzbekistan and Jordan. These are the two countries that have qualified for the first time for the FIFA Men's World Cup 2026. Next, who was appointed as the President and Managing Director of Dell Technologies Incorporation of India in June 25, succeeding Alok Orai? So, Manish Gupta was appointed as the President and Managing Director for Dell. Next, identify the correct statements regarding the 3rd United Nations Ocean Conference held in Nice, France in June 2025. If we look at the options here, we have to find the correct statement, right? So, if we look at the options here, option A is right, that is saying China's Li Junha was appointed as the Secretary General of UNCO3 by the United Nations Secretary General to overall monitor their preparedness. So yes, it is absolutely right. B is saying that B is wrong here and C is wrong, correct? So remember, only the option A is right here. Next is, where was the 113th session of the ILC, International Labour Conference or Parliament of Labour, the highest decision making body of the International Labour Organization, in which Union Minister Dr. Mansukh Mandviya represented India, held in 2025. So where was this held? This was held in Geneva, Switzerland. So the location was asked here. This conference will create global label standards, review the member countries and also their policies, and address the key issues such as your workers' right, social security and workplace biological hazards that can cause problem. Next, identify the country that joined the BRICS as the 10th partner country in June 2025. It is Vietnam, right? Vietnam is the country, right, that joined the BRICS as their 10th partner country. Next is, United Nations General Assembly declared 2026 as the International Year of the Women Farmer to acknowledge the critical role of women in agriculture and to raise awareness about the challenges they face globally. Question asked is, which country initiated the resolution that led to the declaration by United Nations General Assembly? It is USA, United States of America. And this resolution was supported by over 100 countries, highlighting the international recognition of women's contribution to global food system. Next, identify the correct statement regarding the Union Minister Piyush Goyal's 5-day official visit to Switzerland and Sweden. If we look at the options here, we have to find the correct statement. So all these three options are rightly mentioned here. Next, who was formally awarded a knighthood by the King Charles III in June, recognizing his remarkable contribution to sports and charitable causes. So who was awarded here the knighthood by the King Charles III? So right option is David Robert Joseph Beckham, right? That is David Beckham, very famous footballer, former footballer. He was awarded here with this honor. Next, mention the name of the satellite that CNSA, China National Space Administration, launched during the Long March 2D carrier rocket from Jiuquan Satellite Launch Center to monitor the natural disasters using advanced space technologies. It is Zhongheng 102. Right, it was launched using Long March 2D carrier rocket and it represented 581st mission of the Long March rocket. Next, Goa Shipyard Limited, that is a defense PSU, launched the 5th fast patrol vessel for the Indian Coast Guard in June, right? And it was under 473 crore rupees project. Identify the indigenously built vessel. What is the name of this 5th fast patrol vessel? It is Achal. Take a note of this. And it can reach a speed of 27 knots. It is 52 meters in length and 8 meters wide. Next,
Name the first Indian sponsor team that made history by winning the rapid section of the third edition of the FIDE World Rapid and Blitz Team Championship held in London in June 2025. It is MGDI. Right, this is the first Indian sponsor team to have won the rapid section of the 2025 FIDE edition of the third edition of the World Rapids and Blitz Team Championship. Next, Jacinda Kate Laurel Ardern, the former Prime Minister of which country, released a memoir. This is the memoir, A Different Kind of Power, where she highlighted her leadership journey and personal milestone. So she is the former Prime Minister of New Zealand. Next, mention the theme under the 10th anniversary of the United Nations International Day of Family Remittance, observed on 16th of June, focusing on sustainable development goals in low and middle income countries. So what is the theme here? It is being asked. It is remittances financing development. Next, mention the company that became the first Indian corporate to issue environmental social governance ESG bonds, right? These are your environmental social governance bonds. Right, they were launched under the Securities and Exchange Board of India's ESG and Sustainability Linked Bond Framework in June 2025. So which is that company we are talking about that has launched these ESG bonds? It is L&T, Larsons and Tubro. These ESG bonds or environmental social governance bond, these are the debt instruments that are used to finance the projects that align with the environment, social and governance goals. Next, VO Chidambaram Port Authority, that is VOC Port Authority, it is located where? It is located in Thoothukudi, Tamil Nadu, right? And it was officially declared as the India's first plastic free port. Take a note of this. This is important. Which is the India's first plastic free port? It is VOC Port Authority, that is in Thoothukudi, Tamil Nadu. Next is identify the stock exchange that announced plans to launch electricity derivatives following the approval from SEBI, right? You will be able to trade in the electricity in the futures options, right? You can buy long and short them, right? So identify the stock exchange. It is your Multi Commodity Exchange of India. They have launched the electricity derivatives here. Next, inaugural edition of the Joint Special Force Exercise Tiger Claw, conducted from 26th of May to 10th of June between Indian Air Force and the United States Air Force, concluded at where? It was in UP, Uttar Pradesh, right? Tiger Claw exercise. And it is held, Tiger Claw is held between Indian Air Force and US Air Force. Then next, according to the third edition of United Nations Ocean Conference, which concluded in France, pick out the correct statement. From the option given here, which of the following is rightly mentioned? If we see here, option B is right, that is, the Coalition of Emerging Ocean Leaders, a global alliance of youth and early career professionals, was officially launched at the UNCO3. So, yes, absolutely right. Next, as per the EIU, Economist Intelligence Unit's Global Livability Index 2025 released on 17th of June, which of the following cities is not among the top 5 most livable cities in the world? So among the following, which is the not in the top 5? So Auckland, New Zealand is not among the top 5, right? These rest, where we can see Copenhagen of Denmark is the most livable city in the world, that is on the first position. Then on second position is Vienna of Austria. Remember, Vienna, Austria used to top the position, but now it is on the second position here, right? So Copenhagen, Denmark on first, Vienna, Austria on second, Zurich on third, Melbourne on fourth. Next, United Nations General Assembly, through the resolution this adopted on 16th of June, proclaimed 4th of December as International Day Against Unilateral Coercive Measures starting from 2025. Right, take a note of this. Then next, who was appointed as the first women secretary of the Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance, succeeding Ajay Seth? Anuradha, I repeat, Anuradha Thakur. Right, Anuradha Thakur was appointed as the first women secretary of the Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance, and she will be succeeding Ajay Seth.
Next, mention the name of the event for which footballer Cristiano Ronaldo announced as the global ambassador. So he was appointed as the global ambassador for esports World Cup 2025 to be held in Saudi Arabia, right? That is in Riyadh, Saudi Arabia. Next, mention the state in India that topped the implementation of Ayushman Bharat digital mission as per the Ministry of Health and Family Welfare. It is Bihar, right? And Bihar has almost achieved 92% online OPD registration rate at the government hospitals or government facilities. Next, which of the following institutions signed a tripartite MOU? Tripartite means three organizations signed here MOU on 18th of June to strengthen the inclusive education for the persons with disability. So, which of the organization among them? Three organization: National Institute of Open Schooling (NIOS), National Council of Educational Research and Training, that is NCRT, and Department of Empowerment of Persons with Disability. So, these three organizations here signed the MOU to strengthen the inclusive education for the persons with disability. Next, name the digital platform that will be enhanced with local language support under the MOU signed between Ministry of Panchayati Raj and Bhashini, that is Bhasha Interface for India. This is basically, Bhashini is an AI platform that is using AI to provide multilingual support to different organizations, even with the ministries here, right? And here you will be seeing to Panchayati Raj, here this Bhashini will be supporting or providing multilingual support, right? So name the digital platform that will be enhanced here. It is Gram Swaraj. And the government of Mizoram, remember, they have also signed an MOU with Bhashini under MEITY to promote the multilingual governance in their area. Next, as per the Skytrax World Airline Award 2025 held in Paris, which of the following airlines was not among the top 5 airlines globally? So among them we can say Indigo is not among the top 5 airlines globally. Qatar Airways first, Singapore Airlines second, Cathay Pacific Airways on third position, right? Then Emirates on fourth position, and ANA All Nippon Airways on fifth position. So these are the top 5. If we talk about Indigo, Indigo stands at 39th position. Headquarter of Indigo is in Gurugram, Haryana. Next, WMO Executive Council recognized 20 new Sentinel observing stations. Which among these newly recognized stations is the oldest? So here, Susquehanna River Station of USA is among the oldest here, right? Which dates back to 1786. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 6 एंड 7 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा स्टूडेंट्स. अगर आप नए जुड़े हैं हमारे साथ तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स. एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सभी के साथ. ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करते हैं, तो इनको देखना मत भूलिएगा. आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ वाटर और ऑफ वर्ल्ड माइनिंग कॉन्फ्रेंस, राइट? इन्होंने ये अभी इसकी कॉन्फ्रेंस हुई हैदराबाद में. देन अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर ने लेके वेरियस फाउंडेशंस टू एंड इनॉग्रेटेड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन पुणे, महाराष्ट्र. देन कर्नाटका कैबिनेट ने अप्रूव किया रीनेमिंग बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी को आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह. देन अभी LIC के द्वारा 2 नए प्लान्स लॉन्च किए गए, नई जीवन श्री एंड नई जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान को. इन सबको हम डिस्कस करेंगे एंड मैनी मोर डिस्कस करेंगे न्यूज आज की वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स. INCWMC, दैट इज इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ द वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस, इनके द्वारा इनकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कंक्लूड हुई ऑन सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग
ऑन सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग थ्रू बेस्ट माइन क्लोजर प्रैक्टिसेस हैदराबाद तेलंगाना में, कि जो हम माइनिंग करते हैं उनकी कुछ गाइडलाइंस, उनके प्रोसीजर्स फॉलो किए जाए ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंच सके, एंड जहां पे माइनिंग हो जाए उस पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड को हम कैसे सस्टेनेबली यूज कर सकते हैं फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पसेस, सेटलमेंट्स के लिए भी। इसलिए यहीं पे हम देखेंगे इसके इवेंट के अंदर, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मल्टीपल पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स, स्टेक होल्डर्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, इन्होंने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे ताकि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, माइनिंग सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबल मेथड्स के ऊपर काम किया जा सके। इसी के अलावा आप देखेंगे मिशन ग्रीन बुकलेट को यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये बुकलेट बेस्ट प्रैक्टिसेस को बताती है कि माइनिंग क्लोजर्स के लिए हमें क्या अपनाना चाहिए ताकि रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम तरीके से हो सके। देन कॉपर विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया जहां पे कॉपर की ग्रोथ के ऊपर बात की गई, कॉपर का जो इंपॉर्टेंस है इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसके ऊपर बात की गई, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सोलर पावर पैनल्स में जो उनका यूज किया जा रहा है इस मिनरल का, उसके ऊपर बात की गई। सिमिलरली एल्यूमिनियम विजन डॉक्यूमेंट को भी यहां पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने ले किया फाउंडेशन स्टोन एंड इनॉग्रेट किए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को इन पुणे महाराष्ट्र। टेक अ नोट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखो ये मल्टीपल प्रोजेक्ट जैसे क्या क्या प्रोजेक्ट रहेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपका PHRC हेल्थ सिटी प्रोजेक्ट। ये PHRC क्या है? पूना हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर हेल्थ सिटी प्रोजेक्ट। इसका फाउंडेशन स्टोन अमित शाह जी के द्वारा ले किया गया पुणे महाराष्ट्र में। यह प्रोजेक्ट 14 एकड़ में होगा विद अ बिल्टअप एरिया ऑफ 1.4 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ एरिया। फिर आ जाता है जयराज स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर। ये बिल्ड किया जाएगा पुना गुजराती बंधु समाज के द्वारा इन पुणे में। 300 करोड़ की लागत से 2.5 लाख स्क्वायर फीट का इसका एरिया रहने वाला है। एंड ये जो फैसिलिटी है ये एक पब्लिक लाइब्रेरी होगी विद मोर देन 5000 बुक्स। इसमें मतलब इस पर्टिकुलर जयराज स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर में पब्लिक लाइब्रेरी भी होगी जहां पे 5000 से भी ज्यादा बुक्स देखने को मिलेंगी। राइट, फिर इसी के अलावा याद रखेंगे थर्ड, स्टैचू ऑफ बाजीराव पेशवा। राइट, इनका स्टैचू भी यहां पे अनवेल किया गया। ये स्टैचू आपका 13 फीट टॉल स्टैचू रहेगा बाजीराव पेशवा 1 का। नेक्स्ट आ जाते हैं, कर्नाटका कैबिनेट ने अप्रूव किया रीनेमिंग ऑफ बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये पहली यूनिवर्सिटी है जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेम के बिहाफ पे इनकी नेमिंग की जाएगी इस यूनिवर्सिटी की। एंड ये 13th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 10 साल के लिए थे, मतलब 2 टर्म्स के लिए यहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के 2004 से लेके 2014 तक। एंड अभी 26 दिसंबर लास्ट ईयर 2024 में इनका निधन हो गया। इनको पद्माश्री से सम्मानित, पद्मा भूषण से सम्मानित किया जा चुका है 1987 में, पद्मा विभूषण से 2001 में। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दे हैव लॉन्च्ड 2 न्यू प्लान्स. First is your Navjeevan Shri and Navjeevan Shri single premium. These are the 2 plans that has been recently launched. If we talk about this Navjeevan Shri plan, right? What is this plan about and why was this launched by LIC? This plan is basically talking about the, or we can say first thing that this is Navjeevan Shri 912 plan, 912, and this Navjeevan Shri single premium, it is 911 plan. Right, if we talk about this Navjeevan Shri plan, here they will provide a guaranteed addition of 8.5 to 9.5% of the annual premium. Right, and here they have also, LIC has also clarified that the actual rate of the guaranteed additions is based on the term of the policy. Then here the policy premiums will be paid up for 6, 8, 10 or 12 years, and the minimum term of the plan is 10 years and maximum 20 years. Then if we talk about this Navjeevan Shri single premium, here the guaranteed additions will occur at the rate of 85 rupees per 1000 rupees of basic premium sum assured. The minimum policy term here is from 5 years to 20 years maximum, and the minimum basic sum assured here is of 1 lakh rupees. Correct, take a note of this. So these are the some plans that you need to know. Then next is CCIL IFSC, that is CCIL इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। राइट, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ टू एक्ट एज अ सेटलमेंट बैंक। डॉलर को सेटल करने के लिए ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को, राइट, एंड इनकी सब्सिडरी को यहाँ पे बेसिकली अप्रूव किया गया CCIL IFSC के द्वारा कि ये सेटलमेंट बैंक की तरह
काम करेंगे फॉर द सेटलमेंट ऑफ डॉलर। इससे होगा क्या, डॉलर सेटलमेंट होगा तो फॉरेन करेंसी सेटलमेंट कह सकते हैं हम इसको। फॉरेन करेंसी सेटलमेंट होगा तो ग्रेटर एफिशिएंसीज हमें देखने को मिलेंगी फंड मैनेजमेंट में, बेटर सर्विसेज, बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज यहां पर हमें देखने को मिलेंगी एंड ट्रेड फ्लरिश होता हुआ दिखेगा। फिर आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस पर। ट्रैक्शन रिपोर्ट अभी रिलीज की गई जहां पे इंडिया रैंक कर रहा है थर्ड ग्लोबली इन द फिनटेक स्टार्टअप फंडिंग। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। इंडिया थर्ड पोजीशन पर है। इवन अगर हम सिर्फ स्टार्टअप्स की बात करें, राइट, एंड यूनिकॉर्न्स की बात करें, तब इंडिया तब भी थर्ड पोजीशन पर यहां पर हमें देखने को मिलता है। एंड फिनटेक होता है आपका फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो इन दोनों को मिलकर होता है फिनटेक, राइट। तो इस फिनटेक फंडिंग में इंडिया थर्ड पोजीशन पे स्कोर करता है ग्लोबली। फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है यूएसए, देन यूके एंड थर्ड पोजीशन पे है हमारा इंडिया। इंडिया का जो फिनटेक सेक्टर है, इन्होंने टोटल रेज किया $889 मिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द FY ऑफ 2025। एंड यहीं पे अगर हम देखें जो अर्ली एज स्टार्टअप्स होते हैं उसमें 10% का यहाँ पे हमें फंडिंग देखने को मिल रही है, ग्रोथ देखने को मिली इन द फंडिंग, जो कि स्टूड एट $361 मिलियन। बेंगलुरु यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे सिक्योर करते हैं एंड मुंबई सेकेंड पोजीशन पे सिक्योर करता है। अगर बेंगलोर देखें तो 55% ऑफ द टोटल फंडिंग को ये सिक्योर करते हैं। नेक्स्ट, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इन्होंने एक MOU साइन किया साउथ कोरिया के KSOE के साथ ताकि इंडिया की शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ावा दिया जा सके। देखो इंडिया में अब जब हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे उन प्रोडक्ट्स को, करेक्ट, इन हाउस कंजप्शन के साथ ही साथ। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे जो पोर्ट्स हैं वो बेहतरीन होने चाहिए। और हम देख रहे हैं कि जो हमारे पोर्ट्स हैं, जो हमारे शिपिंग कंटेनर्स हैं, राइट, इनके ऊपर बहुत काम किया जा रहा है इंडिया के द्वारा एंड एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाया जा रहा है ताकि अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं तो हमारे देश में कोई कमी ना आ सके एक्सपोर्ट करने में, राइट। इससे क्या होगा, दोनों कंपनीज मिलकर काम करेंगी, जो स्किलिंग है वो बढ़ती हुई दिखेगी, रिसर्च बढ़ती हुई दिखेगी, डेवलपमेंट बढ़ती हुई दिखेगी दोनों के बीच में, टेक्नोलॉजी शेयर होता हुआ दिखेगा दोनों के बीच में एंड शिप बिल्डिंग प्रोसेस में और बेटर काम करेंगे। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटीज भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे। थाईलैंड ने अपॉइंट किया फुनथम को एज देयर न्यू एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद आ जाते हैं सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपी से बिलोंग करती हैं एंड ये पहली इंडियन नेवी वीमेन फाइटर पायलट बनी जिनको विंग्स ऑफ गोल्ड से भी सम्मानित करा गया, राइट। तो आस्था पूनिया आप इनको यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि वो पहली इंडियन वीमेन कौन बनी जो कि इंडियन वीमेन फाइटर पायलट है फॉर इंडियन नेवी, वो है आस्था पूनिया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रियंका कक्कर, ये इनको अपॉइंट किया गया को प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स CCI, ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, राइट। एंड इन्होंने ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने प्रियंका कक्कर को अपॉइंट किया गया एज द को प्रेसिडेंट ऑफ दिस ब्रिक्स CCI वीमेंस विंग। अगर हम बात करें प्रियंका कक्कर की तो ये आपकी चीफ स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की एंड 2025 से 27 टर्म के लिए इनको यहाँ पे 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया एंड इनकी जो लीडरशिप एक्यूमेन है एंड जो कमिटमेंट है वीमेन एम्पावरमेंट को लेके, इसके लिए इनको सराहना देते हुए यहाँ पे इस पोजीशन पे अपॉइंट किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं साइंस एंड टेक पर स्टूडेंट्स। देखो स्टारलिंक क्या कंपनी है इलॉन मस्क की, ये सैटेलाइट्स लॉन्च करती हैं जिसके थ्रू इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है इवन इन द रिमोट एरियाज, राइट। तो इंटरनेट सैटेलाइट्स की मदद से इंटरनेट प्रोवाइड कराने का काम करती है स्टारलिंक। इन्होंने इंडिया में जियो एंड एयरटेल के साथ टाई अप किया टू प्रोवाइड दिस। तो अब सिमिलरली प्राइवेट प्लेयर हम देखने को मिल रहा है अनंता टेक लिमिटेड ATL, ये यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ स्टारलिंक को ये सिमिलर टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड करेंगे, स्टारलिंक को ये चैलेंज करेंगे इन द मार्केट एंड इन्होंने लॉन्च की इंडिया की पहली प्राइवेट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस को। सो मार्क दिस इंपॉर्टेंट, राइट। इवन हम देखेंगे इन स्पेस का भी इनको ऑथराइजेशन मिल चुका है एंड उनकी मदद से ये फर्दर काम करने वाले हैं। जो इनकी सैटेलाइट है 100 Gbps तक की स्पीड यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी एंड इस सैटेलाइट को पोजीशन किया जाएगा ओवर 35,000 किलोमीटर अबव द अर्थ। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं नासा ने डिस्कवर किया 3I एटलस को, जो कि थर्ड नोन इंटरस्टेलर कॉमेट है, पास कर रहा है थ्रू आवर सोलर सिस्टम। इंटरस्टेलर कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट, ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी भी सन की ग्रेविटी से अट्रैक्ट नहीं होते एंड ये होवर करते रहते हैं स्पेस में, यूनिवर्स में, राइट। तो ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो कि अभी हमारे सोलर सिस्टम से पास करेगा 3I एटलस। नासा के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था एंड ये थर्ड ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्कवर किया गया।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पर आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 5 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड जो आइडियाज हैं इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इक्वालिटी, वर्ल्ड पीस, उसको प्रमोट करने के लिए ताकि सोसाइटी का एक डेवलपमेंट बेटर हो सके। इसी की एक थीम याद रखेंगे, कोऑपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ये डे फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, जो इस बार हमने कब देखा, 5 जुलाई को। फिर आ जाते हैं स्टेट न्यूज पे स्टूडेंट्स। ओडिशा एंड स्काईमेट वेदर सर्विसेज, इन्होंने पार्टनर किया, एक एमओयू साइन किया ताकि विंड्स प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा सके। विंड्स है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम। इससे बेटर डाटा हमें देखने को मिलेगा वेदर से रिलेटेड, जिससे जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी ताकि वो अपनी फर्दर प्लानिंग कर सके क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, राइट। इसी से हम देखेंगे जो अगर हमें बेटर वेदर डाटा मिलेगा, इवन जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी कि उसके बेसिस पे वो फर्दर फार्मर्स को गाइड कर सकते हैं ताकि जो इंश्योरेंस है उनको कहीं ना कहीं लॉस ना देखने को मिले, उनको बेनिफिट ही रहे, राइट। इससे फार्मर को भी बेनिफिट होगा, इंश्योरेंस कंपनी को भी बेनिफिट मिलेगा। डिजास्टर्स के लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड रह सकेंगे, क्रॉप इंश्योरेंस को फायदा होगा, रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा बेटर हो सकेगा बोथ इंश्योरेंस सेक्टर में एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में, राइट। तो ओडिशा स्टेट ने स्काईमेट वेदर सर्विसेज के साथ मिलकर यहाँ पे ये एमओयू साइन करा। फिर आ जाते हैं, बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम को फॉर यूथ इंटर्नशिप्स एंड स्किल डेवलपमेंट। मतलब यूथ को यहाँ पे स्किलिंग की जाएगी, यूथ की स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड स्किल्स के साथ साथ उनको यहाँ पे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो बेटर से बेटर इंटर्नशिप में आ सकें, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सके, आज की जो स्किल्स हैं वो उन तक पहुंचाई जा सके। एंड टारगेट रहेगा कि यहाँ पे 2031 तक हम 1 लाख से भी ज्यादा यूथ को ट्रेन कर सकें इसके अंदर, राइट। अभी जो फर्दर टारगेट है, इनिशिएटिव है, 18 से 28 साल के यूथ को टारगेट किया जाएगा एंड यहीं पे कुछ फंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे 4,000 रुपये हर महीना क्लास 12 के बच्चे को, आईटीआई सर्टिफिकेट वाले को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट को 6,000 रुपये देने का काम किया जाएगा। इसी के अंडर अगर हम देखें इमीडिएट जो बेनिफिट है, मतलब आने वाले अगर हम देखें तो 5,000 बच्चों को यहाँ पे टारगेट किया जाएगा कि वो कम से कम 5,000 बच्चों को यहाँ पे हम आने वाले साल में टारगेट करके उनको ट्रेन कर सकें, फर्दर हम इसको और आगे इंक्रीज करें। फिर आ जाते हैं मध्य प्रदेश इंदौर में। तो इंदौर ने लॉन्च किया इंडिया का पहला क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम। ये बेसिकली सिमिलर रहेगा, आपका क्यूआर कोड रहेगा, एक एडवांस एंड यूनिक कोड रहेगा, हर घर के लिए अलग कोड रहेगा एंड उसको स्कैन करने पे आप इजीली उस घर की लोकेशन के बारे में, उसका एड्रेस, राइट, उससे रिलेटेड पेपर्स, उसकी ओनरशिप, सबका डाटा निकाल सकते हैं। तो प्रॉपर आपका जो डिजिटल एड्रेस है या फिर हम बोले एड्रेस को प्रॉपर डिजिटाइज करने का यहाँ पे काम किया जाएगा। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है जिससे डिजिटलाइजेशन हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड यहाँ पे आईआईटी हैदराबाद के द्वारा यहाँ पे हेल्प किया गया है इस सिस्टम को फर्दर इंकॉर्पोरेट करने के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होती हुई दिखेगी। जाते हैं, हम बात कर रहे हैं कैनेडियन ग्रैंड पिक्स की। ये 63rd एडिशन था कैनेडियन ग्रैंड पिक्स का। किसके द्वारा जीता गया? जॉर्ज रसल के द्वारा जीता गया। ये 2025 की इनकी पहली विक्ट्री है। ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं एंड ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ ग्लोबल विंड डे? ग्लोबल विंड डे 15 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम पूछी जा रही है आपसे, तो थीम है डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन। नेक्स्ट, अभी किन 2 कंट्रीज ने क्वालिफाई कर दिया फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम? तो उज्बेकिस्तान एंड जॉर्डन के द्वारा इन दोनों कंट्रीज की फुटबॉल टीम ने क्वालिफाई किया फॉर द फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 के लिए। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डेल टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेशन इंडिया के इन जून, सक्सीडिंग आलोक ओहरी? तो कौन अपॉइंट किए गए हैं यहाँ पर? मनीष गुप्ता अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डेल टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 3rd यूनाइटेड नेशंस ओशंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नाइस, फ्रांस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन आपसे करेक्ट पूछा गया है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, चाइना के ली जुआ, इनको अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी जनरल ऑफ दिस UNCO3 बाय द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल टू ओवरऑल मॉनिटर द प्रिपरेशंस। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 113th सेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑफ कॉन्फ्रेंस
जो कि हाईएस्ट डिसीजन बॉडी मेकिंग है ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, जो जून में हुई थी। तो कहाँ पर हुआ था? वेयर वॉज द 113 सेशन ऑफ दिस इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, हमें देखने को मिला। तो ये हुआ था जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने ज्वाइन किया ब्रिक्स को एज द 10th पार्टनर कंट्री। तो वियतनाम यहाँ पे 10th पार्टनर कंट्री के तौर पे वियतनाम ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इन्होंने डिक्लेयर किया 2026 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वीमेन फार्मर टू एक्नॉलेज द क्रिटिकल रोल ऑफ वीमेन इन एग्रीकल्चर एंड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस दे फेस ग्लोबली। क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने इनिशिएट किया दिस रेजोल्यूशन को दैट लेड टू द डिक्लेरेशन बाय यूएनजीए? तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। एंड 100 कंट्री से भी ज़्यादा ने इस डिक्लेरेशन को सपोर्ट किया। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल्स 5-day ऑफिशियल विजिट टू स्विट्जरलैंड एंड स्वीडन। तो यहाँ पर अगर हम इनकी विजिट की बात करें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, किनको फॉर्मली अवार्ड दिया गया नाइटहुड बाय किंग चार्ल्स द थर्ड इन जून, उनकी रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन के लिए टू स्पोर्ट्स एंड चैरिटेबल कॉजेज। तो यह है डेविड बेकम, जो फॉर्मर फुटबॉलर है, इनको यहाँ पे नाइटहुड से सम्मानित किया गया। टेक अ नोट ऑफ दिस। इन्हीं के अलावा गैरी ओल्डमैन एंड रॉजर डॉल्ट्रे, इन दोनों को भी यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द सैटेलाइट जो लॉन्च की गई, सैटेलाइट दैट CNSA लॉन्च, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, जून 2025 में, यूजिंग लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट फ्रॉम जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर टू मॉनिटर नेचुरल डिजास्टर्स यूजिंग द एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी। तो उस सैटेलाइट का नाम पूछा जा रहा है, वो है ज़ेंगहेंग 102। नेचुरल डिजास्टर्स को मॉनिटर करने का इसका काम रहेगा। नेक्स्ट, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि एक डिफेंस PSU है, इन्होंने लॉन्च किया 5th फास्ट पेट्रोल वेसल फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड इन जून 2025 अंडर अ 473 करोड़ प्रोजेक्ट। आइडेंटिफाई द इंडिजीनियसली बिल्ट वेसल हेयर। तो उस वेसल का नाम क्या रहेगा? वो है अचल। टेक अ नोट ऑफ इट। 27 नॉट्स तक इसकी स्पीड यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट इंडियन स्पॉन्सर टीम जिन्होंने हिस्ट्री बना दी बाय विनिंग द रैपिड सेक्शन ऑफ द 3rd एडिशन ऑफ द फाइट रैपिड एंड ब्लिट्स टीम चैंपियनशिप, जो कि लंदन में हमें देखने को मिला था। तो ये MGD1 ये टीम का नाम रहेगा। याद रखेंगे, ये पहली इंडियन स्पॉन्सर टीम है जिन्होंने रैपिड सेक्शन को जीत लिया है। नेक्स्ट, जसिंदा केट लॉरेल आर्डन, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, कहाँ की? ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड की, राइट। इन्होंने अपना एक मेमोरियल लॉन्च किया जो कि है अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, जिसमें ये हाईलाइट कर रही है अपनी लीडरशिप जर्नी को एंड पर्सनल माइलस्टोन को। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द थीम अंडर विच द 10th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ऑब्जर्व्ड ऑन 16th ऑफ जून, जो फोकस करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो वो कौन सा है? वो है रेमिटेंस फाइनेंसिंग डेवलपमेंट, राइट। ये वो थीम है अंडर विच द 10th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ऑब्जर्व्ड ऑन 16 जून। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ जो कि पहली इंडियन कॉर्पोरेट बन गई जिन्होंने इशू किया ESG बॉन्ड्स को, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस बॉन्ड को इशू किया गया, जो कि सेबी के ESG सिक्योरिटी लिंक बॉन्ड फ्रेमवर्क के अंडर है। तो ये कौन सी कंपनी है? ये है L&T के द्वारा ये बॉन्ड्स लॉन्च किए गए हैं। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। एंड ये डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किए जाएंगे टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट जो कि इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस गोल से अलाइन करेंगे। नेक्स्ट, VO चिदम्बरनार VOC पोर्ट बेसिकली। तो ये VOC पोर्ट अथॉरिटी कहाँ की है? ये तुथुकुडी तमिलनाडु की है। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ इससे रिगार्डिंग आपको याद रखनी है, ये वो है कि इंडिया की पहली प्लास्टिक फ्री पोर्ट ये बन गई है, राइट। टेक अ नोट ऑफ द, इंडिया का पहला प्लास्टिक फ्री पोर्ट तुथुकुडी तमिलनाडु में, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे लॉन्च किया गया इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स को। मतलब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे आप कंपनीज के फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, राइट। तो सिमिलर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की डेरिवेटिव्स में भी आप ट्रेड कर सकेंगे। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, MCX के द्वारा। नेक्स्ट, द इनॉग्रल एडिशन ऑफ अ जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भी हमें देखने को मिला। इंडियन एयरफोर्स एंड US एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। 26 मई से 10 जून तक ये एक्सरसाइज हुई।
पूछा जा रहा है कहाँ पर हुई, ये लोकेशन क्या रहेगी, तो यूपी में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस, राइट, ये अब इसका 3rd एडिशन हमें देखने को मिला था जो फ्रांस में हुआ था। आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इसमें से कौन सा करेक्ट रहेगा। तो सभी ऑप्शंस में से देखें, ऑप्शन बी सही है। द कोलिएशन ऑफ एमर्जिंग ओशन लीडर्स, जो कि एक ग्लोबल अलायंस ऑफ यूथ एंड अर्ली करियर प्रोफेशनल्स, इनको ऑफिशियली लॉन्च किया गया एट यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट, एज पर द EIU इन्वायरमेंट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इनका डाटा रिलीज किया गया ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 का 17 जून को। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट अमंग द टॉप 5 मोस्ट लिवेबल सिटीज इन द वर्ल्ड। तो इसमें से टॉप 5 में ऑकलैंड न्यूजीलैंड नहीं आता स्टूडेंट्स। टॉप पर आ जाता है आपका कोपेनहेगन, राइट, टॉप पर आ जाता है कोपेनहेगन डेनमार्क का। दूसरे पे आ जाता है वियना। वियना काफ़ी टाइम से टॉप करता था, लेकिन इस बार कोपेनहेगन ने सिक्योर करी फर्स्ट पोजीशन। वियना ऑस्ट्रिया ऑन सेकेंड पोजीशन। देन 3rd पोजीशन पे आ जाता है ज़ुरिच ऑफ स्विट्जरलैंड। 4th पोजीशन पे आ जाता है मेलबॉर्न ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड 5th पर जिनेवा। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने अडॉप्ट किया 16 जून, प्रोक्लेम्ड 4th दिसंबर, राइट, या फिर हम बोलें 16 जून को ये रेजोल्यूशन पास हुआ, जहाँ पे डिसाइड किया कि 4 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करेंगे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलैटरल कोर्सिव मेजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2025। नेक्स्ट, who was appointed as the पहली वीमेन सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि अजय सेठ को सक्सीड करेंगी। कौन है वो? है अनुराधा ठाकुर, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द इवेंट फॉर विच फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वॉज अनाउंस्ड एज द ग्लोबल एम्बेसडर। तो ग्लोबल एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के, जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट इन इंडिया जिसने टॉप किया द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो किसके द्वारा टॉप किया गया है? यहाँ पर बिहार के द्वारा टॉप किया गया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने एक ट्राईपार्टाइट MOU साइन किया। ट्राईपार्टाइट मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने MOU साइन किया, ताकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके ऊपर काम किया जा सके फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, देन NCERT एंड DEPW, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इन तीनों के द्वारा ये MOU साइन किया गया, ताकि जो बच्चे हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी उनकी इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर काम किया जा सके, मतलब मिलकर उनको बाकी बच्चों के साथ सभी तरीके की सुविधाएं प्रोवाइड की जा सके एंड भेदभाव ना देखने को मिले उन्हें स्कूलों में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज आवर होमवर्क सेक्शन। फर्स्ट इज व्हेन डू वी ऑब्जर्व संविधान हत्या दिवस? टेल मी द डेट ऑफ इट एंड द एडिशन विच वी ऑब्जर्व। सेकेंड, MSME डे, व्हेन डू वी ऑब्जर्व इट? थर्ड, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, when do we observed it plus the theme of it? Fourth, when was or recently name the cricketer who has launched his autobiography? And fifth question, tell me recently who has won the, or name that person who has won the Ostrava Golden Spike 2025. So these are your 5 homework questions and I need to see maximum participation from all of you.